आज मैं आपके लिए वही परसेंटेज का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फर्स्ट एपिसोड में मैंने 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, इसमें भी 6-7 ही होगा। आई होप कि आप पहले वाले को देख रहे हो और कुछ गेन भी हुआ। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए, 4-5 बुक मैंने कंसल्ट करके क्वेश्चन बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कि आप इक्विप हो जाओ अच्छी तरह। और ये क्वेश्चन सीखने का एक तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे पार्ट वन में मानो 7 क्वेश्चन मैंने दिया है, कैसे आप सीखोगे, कैसे ग्रिप में लाओगे अपना। 7 क्वेश्चन पहले आप सिर्फ क्वेश्चन कॉपी में लिख लो। लिखने के बाद आप इसको देखो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। मैं कुछ ना कुछ बताता हूं कैसे सॉल्व किया है, वो पहले आपने थोरो आप देखते रहो सिर्फ क्वेश्चन लिखने के बाद। उसके बाद आप क्या करना, आप सीख भी गए हो और आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी आप लिख के रखे हो। उसके बाद बिना देखे इसको सॉल्व करो, देखो अपने आप ही आ जाएगा। हो सकता है 7 में से आपका 4 क्वेश्चन सही होगा, 3 क्वेश्चन गलत होगा, वो देख लो कि कहां पे आपने गलती किया है। इस तरह खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को बनाओ। जो भी सीखा है, मैथमेटिक्स करते करते ही मैथमेटिक्स सीखा जाता है। कोई बाहर के आदमी आके आपको सिखा नहीं सकता, आपको खुद को सीखना है। और कैसे सीखना है, ये तरीका है। मैंने भी ये सीखा, ऐसे ही जो आगे सीखेंगे वो ऐसे ही सीखेंगे, अगर उनको मैथमेटिक्स सीखना है तो। नहीं तो वही 2-4 क्वेश्चन करके आप बोलोगे कि हाँ मेरा हो गया चैप्टर, ये ऐसा नहीं होता। मास्टरी करने के लिए कुछ ना कुछ, नो पेन नो गेन। पेन नहीं करोगे तो गेन कभी भी नहीं होगा, और गेन करोगे दैट विल फॉर एवर लास्टिंग, बहुत दिनों के लिए होगा। तो मैं आपको सेकंड पार्ट का परसेंटेज, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। Now this is the first question. The population of a town increased by 10% annually. If the present population is 60,000, what will be its population after 2 years? Now आपको यहाँ पे क्या क्या मिला? एक है present population is 60,000. Okay. The present population equal to 60,000, it is given. Now next year क्या होगा? 2 years हम बाद में आते हैं। next year क्या होगा? With the increase of 10%. Now 10% population after 1 year क्या होगा? यहाँ पे 60,000 प्रेजेंट है, प्लस 10% इंक्रीज हो रहा है, इंटू 60,000। यहाँ पे क्या होगा? 0 कट जाता है। That means 60,000 plus 6 ये होगा 66,000। ये है आफ्टर 1 year population would be 66,000. Now 2 years population after 2 years equal to कितना है? 66,000. Calculation would be made on this population, 10% increase into 66,000. 0 कट जाता है। यहाँ पे क्या होगा? 66,000
plus 6600. That means 72,600 population after 2 years. This is the present population. After 1 year, population would be 66,000, and after another 1 year, the population would be 72,600. This is a very easy question. तो easy question से start किए हैं. Now second question again on population. थोड़ा सा अलग method में. Now this is the second question. The population of a town increased by 10% annually. If the present population is 22,000, find its population a year ago. यहाँ पे पिछले ईयर का पॉपुलेशन आपसे मांग रहा है, कितना होगा. इस क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले से अलग है. यहाँ पे हम लेते हैं लेट द पॉपुलेशन be 100 a year ago. एक साल पहले लेट पॉपुलेशन बी 100. 10% increased population. Increased population. कैलकुलेशन होगा 100 के ऊपर. 100 10/100 इंटू 100. दैट मीन्स ये कट जाता है, तो कितना आता है 110. ये पॉपुलेशन ईयर एगो इंक्रीज पॉपुलेशन. दैट मीन्स ईयर एगो देयर वाज अ पॉपुलेशन ऑफ 100. 10% इंक्रीज होने के बाद ये आता है. नाउ if the population is 110, then the population was 100 a year ago. Now, if the population is 1, then the population was 100 by equal to 10/11 year ago. Now, what is the present population? Now, 22,000. Now, if the population is 22,000, then the population would be 10 divided by 11 into 22,000. That means 2. So, 20,000. So year ago population was thus population was 20,000 a year ago. This is the second question. ये क्वेश्चन पहले वाले से में थोड़ा सा हटके है. Now coming to the third one. Now this is the third question. The price of sugar goes up by 20%. Full stop. How much percent must a housewife reduce her consumption
so that the expenditure does not increase. मतलब दाम कीमत बढ़ेगा 20%, so naturally consumption कम करना पड़ेगा to maintain the RDR budget. Now यहाँ पे क्या करोगे, let the cost of sugar be rupees 100. Increase up cost increased by 20%. It means 100 plus 20 equal to 120 rupees. 120 100 में 20% बढ़ गया, that means obviously it will be 20. So present cost is 120. Now if the present cost is rupees 120, then the earlier cost equal to rupees 100. If the present cost is rupees 1, then the earlier cost would be 100 divided by 120. That means 0 0 कट जाता है, 5/6. 5/6. Now अब आता है, so if the present cost rupees 100, then यहाँ पे क्या होगा, 5/6 into 100. That means 3/50. That means 250 divided by 3. 250 divided by 3. That means 83. It comes to rupees 83.33, I think. 33. Now, अब रिडक्शन की बात है. How much would be reduced consumption? यहाँ पे reduction in consumption equal to 100 minus 83.33. That means 16.67 or 16 2/3%. इतना रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन, 16 2/3% or 66.67%. Very interesting question. Now coming to the fourth one. Now this is the fourth question. Mohan's income is 15,500 per month. He saves 11% of his income. If his income increases by 10%, then he reduces his savings by 1%. How much does he save now? ये लग रहा है कि कोई थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है. देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम इज मोहन्स income equal to rupees 15,500. Now savings equal to 11%.
11% of 100 into 15,500 0 0 कट जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे होता है 705 रुपीज इक्वल टू रुपीज 1705. Now, after increment, his income. After increment, his income equal to 15,000 original income plus 10% increase into 15,500. It will come 15 0 0 कट जाता है, 0 0 कट जाता है. यहाँ पे 15 दैट मीन्स 17050 ये आता है उनका इंक्रीमेंट. आफ्टर इंक्रीमेंट इनकम इज 17,050 रुपीज. नाउ हिज सेविंग्स इक्वल टू पहले 11 था माइनस 1% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 17,050. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 17,050 0 0 कट जाता है. क्या बचता है 1705. As same as above. So his saving is same as above 1705. Nothing will change. This is the fourth question. Now this is the fifth question. Out of our total income, Mrs. Sharma spends 20% on house rent and 70% of the rest on household expenditures. If she saves rupees 1800, what is the total income? First of all, let the income be 100 rupees. Let the income be rupees 100. Now, on 100, she spends 20% on house rent. Spends on house rent. That means 100, 20%. 20 divided by 100 into 100. That means rupees 20. Out of 100, she spends on house rent rupees 20. Now 70% of the rest, that means remaining amount क्या है, remaining amount equal to 100 minus 20, that means rupees 80. Now on 80 she spends on household expenditure. That means spends on household item. Household items equal to 70% into 80. 0 0. That means rupees 56. ये हाउस होल्ड में अब इनका रिमेनिंग अमाउंट क्या है, इस हर सेविंग्स इक्वल टू 100 minus 20 plus 56. That means 24 rupees 24 in the savings. Now if savings
is 24, then her income was rupees 100. If savings is rupees 1, then his income would be 100 divided by 24. 24. Now, if his savings is rupees 1800, then 100 by 24 into 1800. That means here 18000 divided by 24 equal to rupees 7500. ये होगा. First of all, let the income be 100. On 100, she spends house rent, on house rent, that is here 20 rupees. Now, after spending 20 rupees, the remaining amount was rupees 20. On 20, she spends on household item, that is 70% on 80. It comes to 56. तो remaining savings कितना है, income इतना था, total expenses इतना, तो 24 rupees 24 was her income. If savings is 24, then her income was 100 original. If rupees in savings is 1, so इनका है 100 divided by 24. If savings is 180, if she saves 1800, so on this year, this will be the answer. So the original income was rupees 7500. Coming to the sixth question. Now, this is the sixth question. A's income is 20% less than that of B. By what percent is B's income more than A's income? It is obvious, it is clear that B's income is more than A. Now, first of all, let us start with B. Let B's income be X. Let B's income be X, rupees X, I think. Now, A's income would be X minus 20%. That means 20 divided by 100 into X. That means X minus 1 by 5X. That means 4X by 5. Now, how much B's income more? B's income is more than A by X minus
4x divided by 5 equal to 5x by 5. X by 5 income is more. Now percentage wise, by what percent B's income more? So percentage wise, B's income more than A equal to x by 5 divided by 4x by 5 into 100. That means x by 5 into 5 by 4x into 100. 5 कट जाता है, x कट जाता है. That means 1/4 into 100. That means 25% is less. X would be cancelled. 5 would be cancelled. The remaining 1/4 into 100, that is 25%. So we get percentage wise B's income is more than A by 25%. Now coming to the 6th question. Now this is the 7th question. In a garden, 60% of the trees are mango and the rest are guava trees. If 60 mango trees are cut down and 60 guava trees are planted, then 45% of the trees are mango trees. Find the total number of trees in the garden. यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे फाइंड आउट करना है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन. Now 60% of the mango trees. How can we write? 60 out of 100. Total number of let the total. Let the total number of trees in the garden be X. So 60% of the mango trees, X, minus ये 60% of the total. Now 60 mango trees are cut down. This is cut down. What will be 40% of the X. Now यहाँ पे जो आपने यहाँ पे लिखा है 60% guava trees are planted, ये मिसलीड करने के लिए दिया है. It has got no value. So we can write 60 divided by 100x minus 45 divided by 100x equal to 60. Now यहाँ पे 60 minus 45x equal to 60 into 100. So 15x equal to 60 into 100. X equal to 60 into 100 divided by 15. That means 4. 400. Total trees in the garden are 400 in number. Total number of garden trees are 400. This is the last question for this video. I am coming with the next topic, that is discount. Till then, ठीक रहो, मैथमेटिक्स करते रहो. गुड बाय.